Welcome to my binary search series. Let's solve another problem, the search insert position. The problem statement. Given a sorted array of distinct integer, a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted in order. You must write an algorithm with big of log n runtime complexity. Means we have to use the binary search to find the number. The question is saying if there is target equal 5 and we have to insert the 5 in this array num array 1 3 5 6 and we have to insert it at the output 2 and input num 1 3 5 6 target equal 2. We have to insert this in middle of 1 and 3 in 2, and where we will insert 7, it will be inserted after, because this is the greater than 6. It will be inserted at the last element plus 1, which means 4. Let's solve example one by one. How would we get the solution of this? We have to get the intuition for it. Let's solve for an example 1. The num we have to insert target equal 5. First we take the left equal 0, right equal nums dot size minus 1. Let's calculate mid. Mid equal 4. Mid not no mid left plus right minus left divided by 2, which means 0 plus 4 minus 0 divided by 2, which will be 2. Array of 2 is a 5, or where our target is 5. We will just return 2. Let's take an example of 1 3 5 6. The target equal to first we calculate the mid element with the mid value 5. The target is 2. It will be 5. मतलब ये जो होगा 2 वो 5 से स्मॉलर होगा, और वो तो हम अपने राइट को कम कर देंगे मिड माइनस 1 से, तो लेफ्ट जो है वो राइट के छोटा है अभी भी 0 और 1, 0 और 1, ठीक है। और हम अब कैलकुलेट करते हैं मिड, तो अब मिड रहेगा इसका 0, और फिर मिड इसका 0 है, तो हम 1 जी 2 से बड़ा है, तो अब इसके बराबर तो है नहीं, तब लेफ्ट को एक और पोजीशन बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट एक पोजीशन बड़ा होते ही अब वो 1 और ये फिर एक पोजीशन चलेगा, और 1 और 3 से छोटा है, तो राइट जो है वो फिर -1 हो जाएगा, मिड -1। तो अब ये हमारे लूप ब्रेक हो गया, अब तो हमें पता है। और जो लेफ्ट इक्वल 1 आया और ये एग्जैक्ट पोजीशन लेफ्ट इक्वल 1 पे ही जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे लेफ्ट को। और चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट्स सॉल्व एग्जांपल 3। नम्स 1 3 5 6 टारगेट इक्वल 7। जो 7 है वो एग्जैक्टली इससे तो बड़ा है, तो इसके बाद ही आएगा वो, जितने हमारे इस लिस्ट के एंड में आएगा, तो लिस्ट का जो एंड है वो साइज डॉट साइज के ही बराबर है वो, तो वो तो टारगेट इक्वल 7 ही रहेगा। और तो टारगेट इक्वल 7 ही हो गया, इसका आउटपुट होगा 4। हम चलो इसका कोड करते हैं अब। तो कोड में हम पहले डिफाइन कर लेते हैं लो इक्वल 0, हाई इक्वल नम्स डॉट साइज। इसके बाद इफ टारगेट इज ग्रेटर देन नम्स डॉट हाई माइनस 1, ठीक है। अब तो इसका हम रिटर्न हाई कर देंगे क्योंकि सबसे लास्ट में जा रहा है। इसके बाद हम मिड कैलकुलेट करेंगे, तो अब सी आउट मिड। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम या वो बाइनरी सर्च का लॉजिक लिख देंगे पूरा। if target is smaller nums mid, if high equal mid minus 1 else low mid plus 1 return false। इसके बाद हम इसको कर देंगे सॉल्यूशन प्रिंट, और सॉल्यूशन प्रिंट करके हम चेक करेंगे। Hello guys, we have just solved this problem. That's it. Thank you for watching my video.